small and medium entity. IFRS for SME standards divided into three parts: omissions, choice, disallowed, and simplification. Investor perspective. According to the conceptual framework, the cost and the burden of producing financial reporting information for shareholders and other stakeholders should not outweigh the benefit of making the information available. Obviously, information benefit ज़्यादा होना चाहिए cost से. IFRS for small and medium-sized entities, that is SME stands, has been issued for use by entities that have no public accountability. This means that its debt or equity instruments are not publicly traded. ये publicly traded नहीं होता है, इसलिए इसे SME कहते हैं. The SME standard reduces the burden of producing information that is not likely to be of interest to current or potential investors in a small or medium-sized entity. You will not have studied this topic in earlier ACCA exam. तो मतलब ये भाई SBR के लिए important है, because we have not studied this before. SMEs, small and medium-sized entity characteristics. Small and medium-sized entities are entities that do not have public accountability and publish general purpose financial statements for external users. जनरल उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल पब्लिश रहता है, जनरल पर्पस के लिए रहता है, एंड उनका जो अकाउंटिंग होता है वो पब्लिक नहीं होता है obviously. A small or medium-sized entity may be categorized as follows. Usually owner managed by a relatively small number of individuals, such as family groups, rather than having an extensive ownership base, therefore will not be listed, no public accountability. Listed नहीं रहती है because यार अंदर ही अंदर family में हो जाता है. Small entities in financial terms, such as by reference to revenues generated and assets and liabilities under the control of entity, have a relatively small number of employees, undertake less complex or difficult transactions. The problems of differential reporting. There are problems associated with having a set of reporting standards for small and medium-sized entities. It can be difficult to define a small or medium-sized entity. If a company ceases to qualify as a small or a medium-sized entity, then there will be a cost and time burden in order to comply with full IFRS and IS standards. Correct. There may be comparability problems if one company applies full IFRS and IS standards while another applies the SME standards. Okay. तो different standards ये लोग apply कर सकते हैं, तो फिर थोड़ा difficulty हो सकता है in comparing SMEs with each another. ये क्या था कि cost and time burden क्या था? मतलब अगर कंपनी सीज हो जाती है, if a company ceases to qualify as a small or medium, तो फिर उनको मतलब उनका जो अकाउंटिंग रहेगा उससे अपन IFRS या IS स्टैंडर्ड में स्विच करेंगे, तो बहुत कॉस्ट और टाइम बर्डन रहेगा, बिकॉज नॉट सब लोग अप्लाई नहीं करते ना. बड़ी कंपनीज के लिए इट इज कंपलसरी टू गो विद द IFRS और IS. पर अगर SME एक बड़ी कंपनी बन गई उसके बाद वो स्विच उनके लिए बहुत एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग है, ऐसा नहीं. इन जनरल अगर वो SME रही तो देयर आर प्रॉब्लम्स विद हैविंग अ सेट ऑफ रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज. बड़ा होने का कुछ नहीं है अगर वो. बट देखना ये लोग क्या बोल रहे हैं, इफ अ कंपनी सीजेस टू क्वालिफाई मतलब एक बार बंद हो गई क्वालिफाई करना अच्छा. और स्मॉल और मीडियम ओके साइज ओके. एंटिटी, देन वो स्विच हाँ हाँ उसके हाँ. लिए कॉस्ट एंड टाइम बर्डन है, ऐसा. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. There may be comparability problems if a company applies full IFRS and IAS standards, whereas another applies SME standards. ये क्या था? मतलब कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा ना अगर SMEs जो है कोई IFRS अप्लाई कर रहा है और कोई SME स्टैंडर्ड्स अप्लाई कर रहा है, तो फिर टू कंपेयर कंपनी टू कंपनी वो डिफिकल्ट हो जाएगा वैसा. बिकॉज आई थिंक जो बड़ी कंपनीज होती है, आई थिंक दे ऑल आर फॉलोइंग IS और IFRS, so it is easy for them to compare their accounts with each other. Yeah. What is the effect of introducing the SMEs standard? The SME standard will be updated approximately every 3 years. In contrast, companies that use full IFRS and IS standards have to incur the time
cost of ensuring complies with regular updates. मतलब basically IFRS and IAS वो companies करते हैं जो बड़ी रहती है because they can afford that much cost and time. But for SMEs it is difficult to do that. So इसके लिए उनके लिए SME standards निकाले गए हैं. Accounting under a full IFRS and IAS standard necessitates compliance with approximately 3,000 disclosure points. In contrast, the SME standard comprises approximately 300 disclosure points, all contained within the one document. This significantly reduces the time spent and the costs incurred in producing the financial statement. Through that, easy. key omissions from the SME standard. क्या क्या omit किया जाता है? जो किया गया, लाइक जो अपन आई थिंक बिग साइज कंपनीज में करते हैं पब्लिक लिमिटेड में, पर एसएमईज में वो नहीं करना जरूरी नहीं है. सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ सेवरल रिपोर्टिंग हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द एसएमई स्टैंडर्ड्स एज फॉलो: ईपीएस, interim reporting, segmental reporting, and assets held for sale. Omission of subject matters from the SME standard is usually because the cost of preparing and reporting information exceeds the expected benefit with users would expect to derive from that information. Correct. बात मतलब तो उसमें सही से है कोई कि इतना बेनिफिट. बोल बोल. हाँ, सॉरी सॉरी तू बोल. मैं बोल रही थी जो कॉस्ट रहेगा ऑफ रिपेयरिंग दिस वुड बी वेरी एक्सपेंसिव, प्लस लोगों को ये कोई इतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा. मतलब देयर विल बी नो बेनिफिट फॉर पीपल नोइंग ऑल दिस बिकॉज इतनी बड़ी कंपनी नहीं है कि ये सब जाने और सब उससे कुछ फायदा हो सके, तो इसके लिए कॉस्ट ज्यादा रहेगा एंड बेनिफिट कुछ नहीं रहेगा. वैसा है. पॉइंट भी है तो ना, क्या बोल क्योंकि रहा था? देख कि मैं बोला था कि जैसे अर्निंग्स पर शेयर, अभी एसएमई है तो उसका शेयर प्राइस वगैरह होगा नहीं होगा, कैसे ही होगा. हाँ, हेल्ड करेक्ट. फॉर सेल जैसी जैसी छोटी सी चीज को वो लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे. सेगमेंटल रिपोर्टिंग एंड इंटरम ये रिपोर्टिंग मतलब इंटरम रिपोर्टिंग मतलब पीरियड बाय पीरियड से. 6 months या हम्म करने की वैसा जरूरत ही नहीं है करके. उतना. ऐसा सेम. Accounting choice disallowed under the SME standards. There are a number of accounting policy choices allowed under full IFRS and IAS standards that are not available to companies that apply the SME standard. Under the SME standard, goodwill is always recognized as the difference between the cost of a business combination and the fair value of the net asset acquired. In other words, the fair value method for measuring the NCI is not available. Okay. There's no fair value of measuring the NCI. इसमें direct difference between the business combination का जो cost है and the fair value of net asset है, वो goodwill consider करते हैं. कॉस्ट ऑफ एक बिजनेस कॉम्बिनेशन मतलब मेरे को वो बिजनेस कॉम्बिनेशन कितने का पड़ा खर्चा. और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एक्वायर्ड. फेयर वैल्यू ऑफ नेट मतलब अपन जो इसमें करते थे कंसोलिडेशन के टाइम पे, ये कंसल्टेशन में. वाला ही ना फेयर वैल्यू. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. हाँ, हम्म. यही. ठीक. मतलब वैसा नेट एसेट मेथड आई गेस वैसे जो करते थे वो नहीं रहेगा. हम्म. नॉर्मल फेयर वैल्यू जो अपन डिफरेंस क्रिएट करते हैं बस वैसा. ठीक. Intangible asset must be accounted for at cost less accumulated amortization and impairment. The revaluation model is not permitted for intangible asset. Okay. There's no revaluation model in this SME में. नाइस. Normal cost. हाँ, नहीं, आई सेड नाइस. yeah. After initial recognition, investment property is remeasured to fair value at the year end with gains or losses recorded in profit or loss. The cost model can only be used if fair value cannot be measured reliably or without undue cost of effort. तो मतलब बेसिकली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू को ज्यादा महत्व दिया जाता है एंड कॉस्ट मॉडल तभी यूज किया जाता है अगर अपन फेयर वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते. अदरवाइज यू डू फेयर वैल्यू. Key simplifications in SME standards. The subject matter of other reporting standards has been simplified for inclusion within the SME standards. Key simplifications to be aware of are as follows. Borrowing costs are always expensed to profit and loss. There is no capitalization or anything.
उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे. While associates and jointly controlled entities can be accounted for using the equity method in the consolidated financial statements, they can also be held at cost if there is no published price quotation or fair value. Therefore, similar alternatives to equity method are available. Associates and jointly controlled entities can be accounted for using the equity method. I think ये अपन को अभी तक. हाँ, वी हैव टू, इसके लिए एसोसिएट्स वगैरह हाँ. कंसोलिडेशन उसका चैप्टर करना पड़ेगा. बट दिस सिंप्लीफाई द ये ट्रीटमेंट. मेथड. हाँ. ठीक है. Depreciation and amortization estimates are not reviewed annually. ये लोग annually review नहीं करते उस चीज को. Changes to these estimates are only required if there is an indication that the pattern of asset use has changed. Okay, अगर कुछ change होता है asset के pattern के usage में, तो फिर वो लोग उसको review करते हैं. Otherwise they keep going on. मतलब normal basic. मतलब I think वो एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो सब वो लोग एनुअली चेक नहीं करते हैं हम्म. until unless पैटर्न में कुछ चेंज हो रहा है. हम्म. Expenditure on research and development is always expensive, profit and loss. Very straightforward. R&D, P&L. In an entity, if an entity is unable to make a reliable estimate of the useful life of an intangible asset, then the useful life is assumed to be 10 years. Okay. व्हाट? Very clear. अगर तुम भाई नहीं बना पा रहे हो, 10 साल कर दो. यूजफुल लाइफ ऐसे. डिटरमाइन ही नहीं कर पाओ तो अगर डायरेक्ट 10 इयर्स में छोड़, सही है. बट आई गेस मतलब वो आई थिंक बहुत अच्छे जजमेंट के साथ होता होगा. छोटी मोटी चीजों पे तो वो मतलब हाँ. आई थिंक वैसे नहीं होता भाई हवा में. ऑब्वियसली गुडविल इज amortized ओवर इट्स यूजफुल लाइफ. गुडविल को यूजफुल लाइफ में amortize किया जाता है. If the useful life cannot be reliably established, then the management should use a best estimate that does not exceed 10 years. 10 साल के अंदर अंदर का ओके. रहना चाहिए. ओके, डज नॉट एक्सीड 10 इयर्स गुडविल के टाइम पे. On the disposal of an overseas subsidiary, cumulative exchange difference that have been recognized in OCI are not recycled to profit or loss. Not recycled to profit and loss. On Yes. disposal of overseas subsidiary, cumulative exchange difference will not be recognized, re-recognized to PNL. वो OCI में ही रहेगा. There are numerous simplification with regard to financial instruments. These are measuring most debt instruments at amortized cost. Now, financial instruments अपन ने किया नहीं है, तो I हम्म. think अपन को difference नहीं पता चलेगा. But चैप्टर measuring most debt चैप्टर करना पड़ेगा. हाँ. तो बेसिकली पॉइंट्स 2 पॉइंट ही है. ठीक है. मेजरिंग मोस्ट डेट इंस्ट्रूमेंट्स एट अमोर्टाइज कॉस्ट. डेट इंस्ट्रूमेंट्स को अमोर्टाइज कॉस्ट पे मेजर करते हैं. रिकॉग्नाइजिंग मोस्ट इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स एट फेयर वैल्यू with changes in fair value recognized in profit or loss. If fair value cannot be measured reliably, then the shares are held at cost less impairment. ठीक है. लास्ट. Advantages and disadvantages of SME standard. Advantage ये है कि there will be time and cost saving due to simplification and omission, particularly with regards to disclosure. Of course, भाई बहुत सारा टाइम सेविंग होगा. 5,000 से भाई 3,000 कितना था वो, 3,000 से 300 पे आ गए. SME standard is worded in an accessible way. ठीक है. मतलब वो easily accessible रहता है. ठीक है. सेव ऐसे किया और जाता standards are. है कि वो इजीली एक्सेसिबल हो, ऐसा हम्म. वर्डेड मतलब. All standards are located within one document, so it is therefore easier and quicker to find the information required. एक ही document में रहता है. Disadvantages ये है कि there are issues of comparability with comparing one company that uses full IFRS and IAS standards and another which uses SME standards. The SME standard is arguable still too complex for many small companies. In particular, the requirement with regards to leases and deferred tax could be simplified. Okay. तो लीजेस और डेफर्ड इसमें भी. सिंपल करना चाहिए, लेकिन वो अभी भी कुछ कंपनीज के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. ये एक डिसएडवांटेज. और ये कंपैरिजन का ये डिसएडवांटेज तो अपन ने ऊपर ही पढ़ लिया था. बस दैट्स इट.
काफी सिंपल।